Well, news now from Bengal, and after weeks of legal wrangle over when they should be held, the first phase of the 5-phase Panchayat polls will begin today. Nearly 75 lakh voters in 3 districts will stamp the ballot paper today, the old-fashioned way to choose representatives to over 10,200 seats in the 3-tier rural bodies, the Gram Panchayat, the Panchayat Samiti and the Zilla Parishad. The districts going to the polls are West Midnapore, Purulia and Bankura, which are together known as Jungle Mahal, that was once the hotbed of Maoist activity. In the last Panchayat polls held 5 years ago, the left had won a majority of seats in these 3 districts. This time, though, the Trinamool has already won over 1,600 seats without a contest, and security is tight with the central forces and state being deployed to ensure the smooth voting in the polling stations. Let's go across to Moni Deepa for more on this. Moni, what's the situation been like so far? Well, so far calm. There's been one stray incident of the leader of the opposition, Mr. Surya Kanta Mishra, being heckled at a place called Belda in West Midnapore district when he went to cast his vote. Apparently, Trinamool leaders surrounded him and heckled him, but security forces rushed him away. We are hearing this from Belda in West Midnapore. But I am at Beenpur in West Midnapore district, and with me is one very familiar face, somebody who made headlines some months ago, national headlines in fact, and this is this young man called Shiladitya Chaudhary. Shiladitya, if you all remember, if you can't remember, let me tell you that Shiladitya was the young man who asked Chief Minister Mamata Banerjee at a public meeting what she was doing about reducing fertilizer prices to help farmers, and Mamata Banerjee had him arrested as a Maoist. वो दिन आपको याद है? आपको क्या याद पड़ता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? वो दिनेर को मने करले खूब নিজেকে খারাপ লাগে। हिंदी में बोलिएगा थोड़ा। हाँ, वो जिस दिन हमको पकड़ लिया था ना, उस दिन का अगर दिन मन में आता है ना, बहुत खराब लगता है मेरे को। ऐसा लगता है जैसे हम हमारे राज्यों में नहीं बस कर रहे, दूसरे के राज्यों में बस कर रहे, ऐसे लगता है मेरे को। क्योंकि मेरे को तो माओवादी बोल के पकड़ लिया था, बाद में देखा गया मेरे नाम के 2 केस है अभी तक। एक केस है, पुलिस को हमको फाइट किया था, हम खुद पुलिस को फाइट किया था, पुलिस को फाइट करके हम भाग गया था। ऐसे करके हमारा नाम पे 2 केस चल रहा है अभी तक। तो वो लोग केस तो उठाया। केस छोड़िए, आपके मन में क्या लगता है? हमारा मन में तो खूब खराब लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। माओइस्ट का तकमा आपको लगा? हाँ, हमको अच्छा लगता है। हमारा अंदर में वही तो बात गुट करता है। यही जो माओ बोला ना मेरे को, वो तो मेरे शरीर से निकल जाएगा तो भी मेरे को अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर को कुछ करना चाहिए था जब साबित हो गया कि आप माओवादी नहीं है? हाँ, उसको तो करना चाहिए था। मेरा केस कम से कम मेरा केस उधर कर लेना चाहिए था। मेरे को कुछ दुख नहीं दे, मेरे से दरकार नहीं है, मेरे को काम दरकार नहीं। मैं जो काम कर रहे उसी से मेरा दिन गुजर लेगा। उसी से उसका पास हम कुछ नहीं मांगता, हमसे मांगता है हमारा केस जो है उसको उठा लीजिए। हमको नौकरी मत दो, हमको कर्म मत दो। हम हमारा जो काम करता है, खलासी का काम करता है, हम खलासी का काम करेगा। पर आप जब इधर उधर जाते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि आप माओवादी हैं? ऐसे नहीं बोलता, हमको बोलता है तेरे को माओवादी बोल के पकड़ लिया था, तेरे को कैसा लगा था? अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बोलता है। लोग मजाक करते हैं मेरे से, तब तेरे को बोलता तेरे को भय लगता है। हाँ, भय तो भय लगता है। हमारा घर है बीनपुर, हमें बाकुड़ा गाँव में काम करता है, कभी पुरुलिया जाता है, कभी दुर्गापुर जाता है, कभी हल्दिया भी जाना पड़ता है। चलिए, हम चीफ मिनिस्टर जरूर आपके बात सुनेंगे कि एटलीस्ट पुलिस केस आपके विरुद्ध जो है वो उठा लें। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर फेसेस in this whole West Midnapore district. He became a national headline. Shiladitya Chaudhary arrested for being a Maoist, now let off, but he's still got the cases against him, and he wants Mamata to get those cases out so that he can be a free man once again. Of course, a very important issue locally here on polling day. Gargi? All right, Moni, so the case is still against that individual. Thanks so much for joining us with that.